Good evening, guys. I hope you are doing good. Today, we are going to start with assets-based accounting standards. And I know there is India-Pakistan match. Still, students are attending our live session. So, welcome you all. So today, before starting chapter number 5, first we will recall all accounting standard in line. So accounting standard 1, disclosure of accounting policy. S2 is inventory valuation. 3 is cash flow statement. 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. 5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. Then 6 is better removed. 7 is a construction contract. 8 is removed. 9 is revenue recognition. 10 is property, plant and equipment. And today we are going to start with these asset-based standards only. 11 is effects of changes in foreign exchange rate. 12 number accounting for government grant. 13 is accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 is employee benefits, 16 is borrowing cost, 17 is segment reporting, 18 is related party disclosures, 19 is leases, 20 is earning per share, 21 is consolidated financial statement, 22 is accounting for taxes on income, 23 investment in associates in consolidated financial statement, 24 is discontinuing operation, 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 is investment in joint venture in consolidated financial statement, 28 is impairment of assets, and 29 is provision, contingent liability and contingent assets. I hope you are aware about all these names of the accounting standard. Daily basis पे हम लोग सभी standards को recall करते हैं. और आज अरे बाप रे, मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बावजूद स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग टुडेस क्लास. सो दिस इज कॉल्ड एज योर कमिटमेंट. ओके, बीच बीच में मैं आपको स्कोर भी बताऊंगा, सो डोंट वरी. पर आज हमारा पूरा फोकस टुडे चैप्टर के ऊपर होगा. सो आज का अटेंडेंस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, आज का अटेंडेंस, बट स्टिल, और आईसीआई को रिक्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है. पर अभी आप लोग बहुत अटेंडेंस कम दिख रहा है क्या? इतना इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकॉर्डिंग टू मी. ओके, सो चलिए, एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. चलो, आधे लोग क्या अहमदाबाद गए लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैच हमारी 20 ओवर्स में ही खत्म हो जाएगी, अपना क्लास खत्म होने के पहले ही. ओके, चलिए. सो गाइस से गुड मॉर्निंग कौन बोला रे भाई? गुड इवनिंग था ना. अभी तक किसका गुड मॉर्निंग चल रहा है? अंकुर पटेल जी, यस. से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, फटाफट फटाफट. चलिए, आई एम फाइन बेटा. चलो, सब लोग आ गए शायद से. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग. ओके, सो टुडे we are going to start with inventory valuation. Now from today beta, you are going to enjoy, because today's standard is not only theory standard but it's a practical standard. आज का standard जो है वो practical standard है. Yes, some students are saying कि sir, classes are important than match. Very good beta. So today's topic, valuation of inventory. So inventory valuation, why this standard? Before starting any standard, see, from today onwards, we are going to see accounting standard. Now, what is accounting standard? Accounting standard means RMPD analysis. What is RMPD? R stands for recognition. Recognition means to pass journal entry. M for measurement, at what value. P for presentation, and D for disclosure. So our accounting standards are now divided in 4 parts. RMPD analysis. So every one of you, there are, before this chapter, in chapter number 4, we have seen disclosure standard, only disclosure, where in financial statements or even in your balance sheet or P&L account. So these are only a disclosure standard in chapter number 4. But today we are going to see inventory valuation, that is the accounting standard. So what is the difference between accounting standard and disclosure standard? Tell me it in the comment section. फटाफट फटाफट बोल दीजिए बेटा. What is the difference? Every one of you. Yes. What is the difference between two? Yes.
चलो चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग स्लोली आई थिंक फर्स्ट ओवर देख लिया आप सबने एंड यू अंडरस्टूड कि भाई इंडिया मैच जीत जाएगी. सो डोंट वरी बेटा, नाउ फोकस. यस बेटा, स्क्रीनशॉट्स में जाते टाइम दे दूंगा आपको, डोंट वरी बेटा. यस्टरडे स्टैंडर्ड के, हाँ जी. रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इज एंट्री. वेरी गुड बेटा सुरेंद्रन. मेजरमेंट ऑफ इवेंट्स मींस अमाउंट्स. ओके. देन presentation is where the presentation in balance sheet of P&L and disclosure in notes to accounts. Okay, disclosure in notes to accounts. हाँ बेटा, अलका शुभमन गया. ओके बेटा, अभी फोकस करो, जाने दीजिए बेटा. शुभमन आउट हुआ तो आउट हुआ. अभी हम लोगों को नहीं तो विकेट गिरेगा इधर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में. सो जितने भी स्टूडेंट्स है बेटा, नाउ फोकस. ठीक है, जाने दीजिए. 23 पे 1 विकेट हो चुकी है. यस, तो अभी आप लोग भी फोकस कीजिए. स्टूडेंट्स लोग मुझे मैसेज करके भेज रहे हैं कि इतना इतना रन हुआ है. रहने दीजिए बेटा, शुभमन को जाने दीजिए. ही प्लेड वेल एंड वी आर गोइंग टू विन, सो डोंट वरी. हाँ, अभी खान जी बोल रहे विराट कोहली आ गया. ओके, समझ गए बेटा. चलिए, कोई बात नहीं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज आरएमपीडी एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर ओनली डिस्क्लोजिंग. ओके. कैसे तुरंत अपडेट्स देते हो ना आप लोग, पढ़ाई में इतने अपडेट्स नहीं देते कभी. हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. Overview. So before starting any standard, first I will show you in real life. Real life में क्या होगा. Yes. You can see, you can read this inventories paragraph. How in real life it is presented. See. चलो, इन्वेंट्री का पैराग्राफ रीड बाय योर ओन. हाँ, रिबिका इज सेइंग मैच के अपडेट्स यही मिल जाएंगे. ओके. माधव तिवारी सेइंग डोंट टेल अबाउट मैच सर, एंजाइटी बढ़ती है. ठीक है बेटा. सो रीड दिस पैराग्राफ इन्वेंटरीज एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. चलो रीड कीजिए बाय योर ओन. हाँ, what is the sentence? To state inventories including WIP. So inventory includes work in progress at lower of cost or NRV. So this sentence is very important. Lower of cost or NRV. The cost is calculated on weighted average method. Cost comprises expenditure incurred in the normal course of business. Now, what is cost? It is also given beautifully in ITC report in bringing such inventories to its location, and it includes where applicable appropriate overhead based on normal level of activity. Obsolete and slow moving and defective inventories are identified at the time of physical verification of inventories and where necessary provision is made for such inventories. Okay, beta. So now this is the paragraph. So what are the new sentences for you? Chalo. Yes. What are the new lines? Write down it in the comment section. So what is the important lines that you understood? Yes.
चलो चलो चलो, जल्दी से रिपोर्ट्स बताओ. What are the new sentences? How many sentences you are getting? Yes, we have to learn in this. Okay, I will make this sentences ka. Yes, beta. Lower of cost or NRV. Very good. और क्या? अरे वाह, रेगुलर अटेंडेंस आ गया बेटा आज. बढ़ रहे स्टूडेंट्स बढ़ रहे. सेकंड वन, वर्क इन प्रोग्रेस. Overheads, very good beta. Overheads is a new concept. Very good. Then obsolete slow moving inventories, very good. And provision for that. See beta, there are three new sentences. Cost or NRV, whichever is lower. Cost, how it is calculated. Weighted average. This is a second important point. Cost includes what? This is number 3. Overheads based on normal level, that we have to understand in this standard. And obsolete and slow moving inventory, provision is made, is number 5. So 5 sentences. Now let's see whether you can understand these sentences after accounting standard 2, after learning of accounting standard 2. So in real life, at least you understood how we are going to present in our disclosure part. Very good. So beta, you have to understand 5 points. How many points over here? 5 points. Okay. चलो तो स्टैंडर्ड की शुरुआत करेंगे. Are you ready guys to start the standard? Today I am going to explain this standard. Monday, I will start with S10 in the first half, and after the break, solving of illustrations of accounting standard 2. Today, I will explain you. We will try to learn whole S2 before break, and after break S24K answers. So you know my method of teaching. So in first half, we will try to understand theory when we are very fresh. Okay. And after beta, in second half, we are going to understand illustration. So I hope you have completed not 24, 25. You have finished with S25. Yes, beta. ठीक है? Say yes or no. Say yes or no. Okay, ready. Chale. So what is the overview? Overview is introduction. Then we have to understand the scope of the standard. I'm not going to tell you to take any screenshot. Screenshot I will give you after this accounting standard explanation. So exclusion, and wherever I am telling you to write this cost formula and disclosure parts. So beta, RMPD analysis. So before starting this standard, first we have to understand what is the introduction of the standard. Introduction. Let's try to understand. Inventories are assets. Try to understand the definition. Inventories are assets, but these assets are not long-term assets. Why you held these assets? Number one, for sale in the ordinary course of business. For sale in the ordinary course of business. रट्टा मार. Okay. So normally हमें ये assets बेचनी होती है. Okay. Second one. So this is finished goods, beta. Very simple. You can see here it is called as finished goods. What is second one, beta? In the process of production for such sale. So these are in the process of production. So in the production for such sale, it's called as WIP. So beta, technical name is in the process of production, and in simple language, it is work in progress. Third one, for consumption.
for consumption. So for consumption means what? Raw material. So raw material is a consumption. So inventories are finished goods. You can see here WIP and raw material. So it is divided in three parts. चलो जल्दी से लिखो comment section में फटाफट फटाफट. Inventories divided in how many parts बेटा? चलो बोलो बेटा. Yes. How many parts inventories are divided? चलो चलो चलो. Comment section में बताओ. Inventories कितने पार्ट्स में डिवाइड होएगा? चलो माय डियर. फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल. और सबसे तेज थे रक्षित राय फ्रॉम SRO. यस, सबसे फास्टेस्ट फिंगर फास्ट रक्षित राय. I hope you understood the definition of inventory. So inventories are asset held for ordinary for sale in the ordinary course of business in the process of production of such sale and for consumption. So this is Rattamar point, by heart point. You have to by heart this definition. Okay, very good, very good. Chalo, now what is the overview? Scope of S2. So scope of S2 beta, S2 provides guidance. Now why guidance beta? We need to determine the value and second one, presentation, where to record. So we have to understand presentation and guidance to determine the value and presentation. So beta, it is of inventories in your financial statements. Okay, so determine the value and presentation in financial statements. ठीक है, एकदम इजी, कुछ भी डर नहीं लग रहा है? ओके सर, चलो सेकंड वन, exclusion. Sir, WIP I am going to teach you in accounting standard 7. Construction contract. So in construction contract, WIP, we have to understand WIP is not covered. Okay, because it is covered in the other accounting standard, work in progress of construction. So construction contract beta, you have to just understand your buildings are not beta constructed in 1 year. So it might be a WIP. So this WIP beta, you have to understand ये जो WIP है वो हम लोग S7 के अंडर कवर करेंगे. If another standard covers it, then why accounting standard 2 will cover? Next one, WIP of service providers. WIP of service providers is also not covered. Third one, shares and debentures. If you have shares or debentures as a stock in trade, we are not going to consider it. And last one, producers, inventories of livestock, agricultural and forest product, mineral oils, ores and gases are also not considered. Okay, so producers of inventories of livestock, agricultural and forest products, mineral oils, ores and gases. Okay, so these are excluded. So exclusion understood. Either another accounting standard excludes considers it, therefore it is excluded from S2, or it is specifically given like producers inventory. Livestock मतलब बेटा जानवर. Okay, animals का stock आपके पास है तो it is not considered. Agricultural forest product is also not considered. Easy छे. Next, measurement. Now measurement is very important. Measurement of inventory, raw material. See beta, now this is very important, how it is measured. So raw material, if finished goods at cost, then raw material at cost. And if finished goods at NRV, then raw material at replacement price. And finished goods or WIP are lower of cost or NRV. Yes, so now you will explain me what is raw material. Okay, I'm giving you 1 minute. See, you will explain me through example. Okay, raw material, read it properly and interpret. I'm giving you 2 minutes to write this example. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपको ये example खुद से बनाना है. Yes, I won't dictate you. 2 minutes. जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, जिनको इच्छा नहीं है फटाफट देखने की इच्छा है, वो लोग 2 मिनट आगे चले जाइए. Yes, they can proceed further after 2 minutes. हाँ जी बेटा.
यस, टेल मी द आंसर। रॉ मटेरियल के बारे में यू कैन गिव मी एग्जांपल। बेटा दिस इज अ वैल्यूएशन। रॉ मटेरियल is ink which we want in pen. Yes. Okay. Now I will give you example. See beta. See the example. Yes. You can write it afterwards. I will give you time to take the screenshot. So I have given one example over here. See beta. Raw material is rupees 10. Okay. Raw material means ink that you are using for pen manufacturing. Very simple. Wages rupees 5 per unit. Direct expenses 3 rupees. And beta, factory overheads. Factory overheads is rupees 2. Yes. So tell me, total cost is 20 rupees. Total cost is 20 rupees. Cost of finished goods. Cost of finished goods is 20 rupees. You got the concept? Okay. So now, ink which we are using due to government policies change, now its replacement cost is rupees 7. Means if you replace it today, if you buy some ink today, you will get it at 7 rupees. Sir, at what price you bought it? 10 rupees. मैं वापस एक बार हिंदी में बोलता हूं। देखो बेटा, आपको पेन तैयार करना है तो पेन की कॉस्ट है आपकी 20 रुपया कॉस्ट। उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, वो रॉ मटेरियल जो है वो आपका 10 रुपया है। रॉ मटेरियल 10 रुपया है, वेजेस 5 रुपया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 रुपया है, फैक्ट्री ओवरहेड 2 रुपया है, एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ये आपका 20 रुपीज है। सो देखिए बेटा, ध्यान देके पढ़ना। तो ये इंक जो आपने लिया हुआ था 10 रुपए का, आज आप वो रिप्लेस करने गए तो आपको 7 रुपए में मिलेगा। तो सर, you told us the principle, cost or price, whichever is lower, you can record it at that. But sir, wait. Remember, your raw material future is in the hands of finished goods. Sir, finished goods will decide
whether you should record it at 10 or whether you should record it at 7. If your finished goods cost is 20 and your selling price is rupees 22, means beta, you are not in loss. You are not in loss. So you are selling above cost. Your financial हुआ है गलती से, it should be finished goods. गलती से financial हुआ है, it should be finished goods. तो ये आपको याद रखना है, ये finished goods है अपने नोट्स में, 100 पेजेस के नोट्स में ये finished goods है. ओके, आर सोल्ड एट above cost. Then raw material, you can record it at 10. You will record it at 10. 11. You can record it at 10. ठीक है बेटा. Overhead means indirect expenses. Beta, overheads in costing you will understand. Indirect expenses. Direct expense means beta, now suppose if I am taking physical classes, then beta, notes which are issued is called as direct expense. And remember, rent that I am paying is called as indirect expenses. It is not per student. It is for total students. So indirect expenses matlab factory overhead. Indirect expenses are divided in 3 parts. Indirect expenses are divided in 3 parts. See beta, if finished goods is sold at 18 rupees, कितने में बेचा? If finished goods is sold at 18 rupees, then you are selling it at below cost. Your finished goods का cost is below cost. Then you will record your raw material at 7 rupees. So raw material का future ये किसके हाथ में? एक बार मैं वापस हिंदी में बताता हूं. एक बार हिंदी में बताता हूं. देखो बेटा, रॉ मटेरियल 10 रुपए में लिया और मेरी जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट थी वो 20 रुपया हुआ. कैसे 20 रुपया हुआ? रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये सभी खर्चों को मैंने कितना रिकॉर्ड किया बेटा? मिला के 20 रुपीज. ओके, सभी खर्चों का टोटल है 20. अभी ऐसा हुआ कि मैं रॉ मटेरियल बाहर बेचने गया, तो सॉरी खरीदने गया, वापस से खरीदने गया, तो मुझे ध्यान में आया कि रॉ मटेरियल तो मुझे 7 रुपए में ही मिल रहा है. रॉ मटेरियल कितने प्राइस में मिल रहा है बेटा? 7 रुपए में मिल रहा है. ओके, अंडरस्टूड. 7 रुपए में मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा है. अभी क्वेश्चन ये है कि फिर मैं सर 7 पे रिकॉर्ड करूं ना, जो 10 रुपए पे मैंने लिया था, पर आपने तो बोला कि 7 रुपए और कॉस्ट विच इज लोअर पे रिकॉर्ड करो. वेट वेट वेट, रॉ मटेरियल का फ्यूचर किसके हाथ में है? फिनिश गुड्स के. यदि फिनिश गुड्स आपका 20 रुपए जेब से जा रहा है, पर आप फिनिश गुड्स 22 रुपए में बेच सकते हो, तो रॉ मटेरियल को आपको क्यों 10 को 7 में रिकॉर्ड करना है? आप फिनिश गुड्स बेच पा रहे हो ना 22 रुपए में, तो रॉ मटेरियल पहले फिनिश गुड्स को चेक करो. यदि फिनिश गुड्स कॉस्ट के ऊपर बेच पा रहे हो तो रॉ मटेरियल 10 पे रिकॉर्ड होगा. तो रॉ मटेरियल 10 पे रिकॉर्ड होगा. एंड याद रखो, यदि फिनिश गुड्स 20 के नीचे रिकॉर्ड कर पा रहे हो, फिनिश गुड्स 20 के नीचे रिकॉर्ड कर पा रहे हो, मतलब 18 रुपए पे बेच रहे हो, तो ध्यान में रखो फिर रॉ मटेरियल जो है वो 10 पे नहीं, वो 7 पे रिकॉर्ड होगा. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. सो फ्यूचर ऑफ रॉ मटेरियल इज इन द हैंड्स ऑफ फिनिश गुड्स. फ्यूचर ऑफ रॉ मटेरियल इन द हैंड्स ऑफ फिनिश गुड्स. चलो जल्दी से बताओ, अंडरस्टूड और नॉट? सर रिप्लेसमेंट प्राइस 12 होगा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर यू डोंट हैव टू सी फिनिश गुड्स. सो रिप्लेसमेंट प्राइस इज 12, तो बेटा वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड इट एट 10. ओके, वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड इट एट 10 कॉस्ट. हाँ, द क्वेश्चन इज व्हेन इट इज बिलो कॉस्ट, देन वी हैव टू सी फिनिश गुड्स वैल्यूएशन. ओके बेटा केशव, से यस और नो? तो रॉ मटेरियल का फ्यूचर किसके हाथ में भाई? Future of raw material is in the hands of finished goods. If raw material prices goes down, if raw material price go down, then बेटा raw material का भविष्य ये finished goods के हाथ में है, ये ध्यान में रखियो. Yes. Can replacement price? It's a market price. See, it's a market price. Normally it's a market price. So raw material
price is in the hands of finished goods. Over? Yes, easy है. चलो. See बेटा, net realizable value and fair value. What is the difference? Sir, normally fair value is a market price. Normally fair value is a market price. But remember, NRV is entity specific. See the difference. If it is available in the market, sir, Institute has taken it as a market price. No. Okay. But see, now I am selling inventory in Pune. So my sales price is normally better. I don't have to incur any advertisement expenditure. But suppose if you are selling any product in village, so what happens? You have to understand, you have to do some advertisement expenses. So for me, net realizable value might be different. And for you, net realizable value is different. Okay. So it must be entity specific. It must be entity specific. इतना याद रखिए. ये हमेशा याद रखिए कि NRV is not market specific. It differs from entity to entity, organization to organization. It differs. Okay. So for you, NRV is different. For me, NRV is different. Okay. And you have to prove to auditor that my NRV is that. Okay. Auditor, again, it's not a question. And auditor, if he thinks it's a wrong calculation, he can share it in the notes. Okay. Ki company has not yet provided it properly. Okay. But if auditor is satisfied and NRV is different for different person, organization, beta, then it will be entity specific. So इसीलिए हमने कभी market price word we have not used. We have used the word NRV, net realizable value. It is entity specific. It is entity specific. Okay. It is entity specific. अरे समझी गयो? चलो. I hope you understood this concept properly. It's very important. Raw material, they may ask you in the exam, what is replacement cost? Now, what is cost? So let's understand what is cost. Cost is divided in three parts. Cost of purchase, purchase price plus non-recoverable duties and other taxes. Then, so non-recoverable duties, whatever GST if you have paid and you are not getting credit. अभी ये GST का session समझने के बाद आपको आएगा. For example, if I am a final consumer, I won't take, अभी for example, एकदम simple सा example देता हूँ. But I am running a business. I have taken from you GST. Okay. Suppose हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस में मैं GST लेता हूं और आपसे जो GST कवर किया और व्हाट रॉ मटेरियल के लिए मैंने GST पे किया, I can take a credit. Okay. For example, I collected from you 100 rupees and I already paid to that supplier 70 rupees. So I will pay government को only 30 rupees. I can take that credit. और वही तो अपने को सीखना है GST में. But sometimes, remember, sometimes we don't have to pay. We are not claiming GST. For example, now I am going to Goa. तो गोवा के बेटा जो बस का चार्जेस है या फेयर चार्जेस, दैट आई कांट क्लेम एज अ जीएसटी का डिडक्शन बिकॉज इट इज फॉर माय एंजॉयमेंट पर्पस. सो जीएसटी के कुछ रूल्स है. अब ये रूल्स आपको पढ़ने जीएसटी सब्जेक्ट में. सो दैट जीएसटी फॉर विच आई कांट क्लेम दी डिडक्शन. ओके. सो नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज आई विल एड इट बिकॉज वो मेरे जेब से गया ना भाई, तो मेरे जेब से गया तो आई कांट क्लेम इट एज. तो ये नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज वी हैव टू एड. अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन. सो सपोज इफ आई एम पेइंग एनी फ्रेट, that is directly attributable. Trade discount less, rebates less करेंगे and duty drawbacks. So duty drawback you will understand at CA inter में, customs में. Okay. So duty drawback I am not going to explain this. Your faculty of GST will definitely tell you. So duty drawback मैं अभी आपको explain नहीं कर पाऊंगा, समझ लीजिए.
Cost of conversion. See, this is a purchase cost. Second cost is conversion. Conversion means what? You are converting raw material. See, this is a raw material cost. And conversion means into finished goods. Conversion into what? Finished goods. Conversion into finished goods. Direct labor, overhead. Sir, overhead याद था? Indirect expenses. And this is divided in two parts. One is fixed and second one is variable. So fix is, now this is very important. Fix is absorbed in higher of actual capacity or normal capacity. And variable overhead is considered at actual capacity. Sir, read it and tell me the meaning. I'm giving you 2 minutes. 2 minutes से आपके पास 3 minutes देता हूं. चलो, now you have 3 minutes. Interpret it. I will give you, open your study material. स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए. ओके चलो 5 मिनट्स दे रहा हूं अभी. 5 मिनट्स. ओके आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल टू ट्राई बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. हाँ जी, हाँ जी. सी दिस एग्जांपल नंबर 2. टेक 5 मिनट्स, रीड इट एंड इंटरप्रेट इट. ये 5 मिनट दे रहा हूं. प्लीज बी सिंसियर व्हेन आई एम गिविंग यू टाइम. प्लीज, इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट. यस, मेरे लिए ये टाइम ज्यादा नहीं है. ये आपने सेल्फ रीडिंग करने के लिए मैंने टाइम दिया है. रीड इट केयरफुली. यू हैव 5 मिनट्स.
Sorry, beta. Yes. What is the meaning? What is the meaning? Yes. Chalo. Tell me fast. You got the concept? You got the concept, beta? See. This example 2, I will show you the answer. What is the concept? Let's understand it. Yes, okay. Normal capacity. Normal capacity is 1 lakh. What is the normal capacity, beta? 1 lakh is a normal capacity. Is given in the question. See the question. ABC Limited has a plant with a capacity to produce 1 lakh units of a product per annum and expected 18 lakhs. So, beta, this is the normal capacity. Okay. Now, actual production is also 1 lakh. So, 18 lakhs divided by 1 lakh. Rupees 18 per unit. Okay. So, actual is also 1 lakh. You expected that we will produce 1 lakh. So, you will charge per unit cost. You will charge per unit cost rupees 18 per unit. Now, actual production is 90,000 units. So, actual production 90,000. Beta, whenever you are charging to cost per unit. See, cost per unit means material, labor, overheads. When you will charge for 1 unit, always consider whichever is higher. क्या consider करना? Whichever is higher. आया समझ में? So whenever बेटा you are charging to, किसको charge कर रहे हो आप लोग? प्रोडक्ट को पर यूनिट कॉस्ट यू विल ऑलवेज चार्ज पर यूनिट. ध्यान में रखना, इसको चार्ज करोगे आप लोग पर यूनिट. सो विच एवर इज हाइयर. सो 18 lakhs divided by 1 lakh is rupees 18 per unit. Got this concept? Suppose, sir, if I divide by 18 lakhs, suppose I will give you the example. Suppose if I divide it by 90,000, if I divide by 90,000, then my cost per unit is rupees 20 per unit. मेरा cost कितना होगा बेटा? 20 per unit. Remember, अभी 20 per unit में cost charge किया, तो my normal capacity is 1 lakh units. Remember, तो यहां पे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है. But now, if you produce, see, if you produce only 90,000 units and you divided by, so now इधर देखो, 90,000 into 80 rupees. You produce only 90,000. So you have produced less. You have produced less. So आप लोगों को closing stock कितना आएगा? 16,20,000. बराबर है क्या? Check it. If you record 16,20,000. Now if I prepare trading account and P&L account. Okay. My expenditure is 18 lakhs. My expenditure is 18 lakhs.
करेक्ट है बेटा? My expenditure is 18 lakhs. And remember, by by trading and P&L, and by here closing stock will be 16,20,000. कितना है? 16,20,000. So automatically 1,80,000 you will record as loss. Automatically you will record as loss. See, this is very important concept. You are not going to understand it without my help. मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, आपने क्या किया? 18 लाख रुपीस का आपका खर्चा था. अभी आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है. अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स एंड 90,000 इज एक्चुअल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है आपकी? 1 लाख यूनिट्स एंड एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है आपकी? 90,000 यूनिट्स. तो अभी आपको जब पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो आपको विचेवर इज हाइयर लेना है. तो आपका कॉस्ट कितना हुआ? आप लोग एक यूनिट का 18 रुपया तैयार करोगे. डोंट डिवाइड बाय 90,000 यूनिट्स. नहीं तो क्या होगा? अभी देखो, आपने खर्चा किया 18 लाख, पर आप रिकवर कितना कर पाए? नॉर्मली 1 लाख यूनिट्स आपने बनाने चाहिए थे. नॉर्मली कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे? 90,000 यूनिट्स ही बनाए. 1 लाख यूनिट्स बनाने चाहिए थे, मतलब आपने कम यूनिट्स बनाए. कम यूनिट्स बनाए मतलब आपने लॉस करवा दिया कि नहीं? कंपनी का लॉस करवा दिया. तो बेटा ये इसीलिए आपने किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? इसीलिए आपने 16,20,000 ही क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना चाहिए. बराबर है? तो आपने कैसे किया? जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 90,000 यूनिट्स, सपोज कुछ भी नहीं बेचा, आपने कुछ भी नहीं बेचा, सो 90,000 इंटू कितना रुपीस? यस, 18 रुपीस. तो आपने सिर्फ 16,20,000 को रिकवर किया. 16,20,000 रिकवर किया मतलब 18 लाख में से 16,20,000 रिकवर हुआ. तो 1,80,000 अपने आप लॉस दिखेगा. अपने आप क्या दिखने वाला है? 1,80,000 इज लॉस. गॉट दिस कॉन्सेप्ट? इजी है क्या? इजी है? यस सर. तो ये ध्यान में रखो कि whenever you are recording, yes, if you have any difficulty you can ask me now. So you will always consider whichever is higher. Okay. So recovery rate is 18 lakhs. Recovery rate यहाँ पे 18 rupees per unit you are going to record. One more time. Last time I'm explaining. See, I incurred 18 lakhs. ध्यान दीजिए. I incurred 18 lakhs and 90,000 units I produced actual. And normal is 1 lakh units. Whichever is higher. So I will record it at rupees 18 per unit. Now, if I prepare trading and P&L account, my expenditure from my pocket is 18 lakhs. And by closing stock, I produced 90,000 units into 18 rupees. So I produce only 16,20,000. Closing stock will be 16,20,000. So my loss will be automatically I will record 1,80,000. And why I'm in loss? Because I produce less than the normal capacity. Normal capacity 1 लाख थी और मेरी actual capacity जो है वो 90,000 यूनिट्स है. तो मेरा लॉस हो गया है. अच्छे से समझा? Yes. Now last one. 1 lakh units and 1,20,000 units. 1 lakh units and 90,000, 1,20,000 units. So I should divide whichever is higher, 15 rupees per unit. Suppose if I divide by 18, तो क्या होगा? See, expenditure 18 lakhs. And if I record at 18 rupees, assume I record it at 80 rupees. Okay.
I produce 1,20,000 units. So 1,20,000 units is a closing stock into 18 rupees, 21,60,000. Sir, my cost is 18 lakhs and how should I record 21,60,000? So this is wrong. So I should record 1,20,000 units into rupees 15. And how I got the 15? Divided by whichever is higher. So sir ने एक technique दिया. Normal capacity or actual capacity, whichever is higher you will consider. While denominator. तो denominator में whichever is higher. Now tell me which one is better presentation and easily understandable presentation. Yes, बताइए comment section में. हाँ, whichever is higher. See, you can do it mechanically. आप एग्जाम में mechanically कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. But whenever you want to try to understand logic, logic is very simple. 18 लाख से नीचे होगा तो चलेगा, 18 लाख से ऊपर नहीं चलेगा. और 18 लाख से नीचे होगा तो कब होगा? When I consider whichever is higher. Okay, denominator is whichever is higher. Okay. So friends, ये था cost का definition. So this is a cost definition. I hope you are clear with this example. एकदम simple है बेटा. Now I understood obviously आपकी your presentation. So what is the reason to change the capacity? See बेटा, change the capacity मतलब change the capacity नहीं होगा. See the reason. किसने पूछा change the capacity? Jahida, change in capacity is like कि I have given you कि your capacity is to study for 10 hours. Okay, is your normal capacity. But you like Sanket sir lectures and you sat for 12 hours. So beta, your capacity, you are using capacity over than what is normal. And if you sit only for 5 hours, then you are not utilizing your full capacity. This is under capacity. Okay. So capacity is actual or normal, whichever is higher. And this is only in case of fixed overhead. Where it is possible, only in case of fixed overhead. Sir, variable overhead, there is no question. Sir, in costing, you are going to understand these concepts once again. In marginal costing जब आप सीखोगे, in costing you are going to understand these concepts. So costing है ना, आपको यदि मेरे से करना है तो दिवाली के बाद शुरू करने वाला हूँ, हिंदी वाले. ओके, ब्रांच के थ्रू, नॉट फ्रॉम हेड ऑफिस. हाँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज में नहीं, थ्रू ब्रांच, जिनको भी जूम पे करना होगा. तो fixed overhead. Now, what is the difference between fixed overhead and variable overhead? I have given you the example, rent. See, example, rent. And sirs can notes. See, I am paying 30,000 rent per month. And what is my expectation? My expectation is 100 students will attend the class. So how much rent portion I will charge to each student? I will charge rupees 300 per month to each student. So my fees will be minimum 300 for rent cost. Okay, I will add some all cost. I will add my profit and I will decide your classes fees. It's very simple. 300 per month. Okay. Notes. Suppose per student, my notes is, assume Xerox cost and binding cost is around 500 rupees per student. Now what happens? See beta, I collected, this is I budgeted. Okay, what I budgeted, 100 students will attend my class. Now actually what happened? Case 1, 120 students, they have taken the admission. कितने students ने admission लिया? 120 students. You are getting my point? Okay. अभी
120 स्टूडेंट्स का फीडबैक, assume 120 students, I collected 300 rupees. So I collected 36,000 from students. And what is my cost is only 30,000. Why this happened? Why this happened? Because extra students came, 20 students extra. Okay. So I'm in profit. This is in costing language called as over absorption. Costing language is different. Okay. So let's understand. Suppose 90 students came. So how much I collected? Only 27,000. I'm in loss. And loss means under absorption. Under absorption of rupees 3,000 and over absorption of rupees, here it is 6,000. Because from pocket only 30,000 beta, I paid for the rent. Okay. Now notes beta, I will take printouts only of that students who have taken the admission. I will incur that cost. So 500, 120 students have taken admission. So it is always on actual capacity. It is always on actual capacity. So rent is on budgeted capacity and variable overhead always on actual capacity. And in S2, this is in costing. ये किस में होता है? कॉस्टिंग में. इन अकाउंट्स वी कंसिडर फिक्स ओवरहेड, रेंट, such cost whichever is higher. When we calculate per unit cost, that rupees 300 per unit, it is we always consider whichever is higher. In costing we consider budgeted, in variable overhead we consider actual, in costing also, but in accounts we consider fixed overhead, budgeted or actual, whichever is higher, and variable overhead same, it is only actual. It is only actual. Understood the concept? अरे say yes or no. So बेटा costing में क्या होता है? Costing accounts, fixed overhead and variable overhead. Costing में we consider budgeted production. Here budgeted or actual, whichever is higher. And in variable overhead, whatever the case, it is always actual. It is always actual. अरे say yes or no. पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ? Yes, हिंदी वाले understood the concept. Very, very important concept, sir. Very, very important. चलो देखो जयेश भाई, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं. पूरा कॉन्सेप्ट मात्र 3 मिनट में हिंदी में बताऊंगा. देखो मेरे दो कॉस्ट होती है भाई. देख बिजनेस बढ़िया है तू. हाँ जयेश भाई बोले तो गुजरात का दिख रहा है मुझे. जयेश भाई लिखा हुआ है तो पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ. वेरी गुड पटेल भाई. जयेश भाई बिजनेस करो छो के नहीं? हाँ चलो ध्यान आइपो. सो फिक्स ओवरहेड कितने? फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड आ बे ओवरहेड छे. ओके. सो फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार हिंदी में बता रहा हूं. सो फिक्स ओवरहेड मतलब क्या? कि जो मैं रेंट पे कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स में, बेटा देखो मैं जो रेंट पे करूंगा, अभी बड़ा ऑब्वियस मेरे जेब से 30,000 रुपया जाएगा. तो हर महीने का जो 30,000 रुपया मेरे जेब से जाएगा, मैं किससे रिकवर करूंगा भाई? मैं मेरे जेब से क्यों? मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा. कोई भी बिजनेसमैन कस्टमर से पूरी कॉस्ट, वहां पे क्या चैरिटी तो लगाई नहीं है, और वो आईसीआई के क्लासेस भी नहीं है. ओके. तो देखो पहली चीज तो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं अवेलेबल करके दे सकता हूं. यदि मैं पुणे ब्रांच से क्लासेस ले रहा हूँ या पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच से क्लासेस ले रहा हूँ, तो बेटा बड़ा ऑब्वियस हमें एक जगह लगेगी फेस टू फेस क्लासेस के लिए, और ब्रांच क्या बोलेगी कि रेंट जो है वो बच्चों से रिकवर करो. बड़ा ऑब्वियस है. अभी हमने 30,000 रुपया महीने का भर रहे हैं वहां पे.
30,000 रुपए भर रहे, 100 स्टूडेंट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे कि 100 बच्चे एडमिशन लेंगे, तो हम लोग एडवांस में ही बोलेंगे ना कि फी कितनी होगी, तो हमने 300 रुपया डिसाइड किया। कितना रुपया डिसाइड किया बेटा? 300 रुपया। 100 स्टूडेंट्स, 30,000 डिवाइड बाय 1000, एक महीने की बैच एज्यूम करते, 300 रुपया पर मंथ। ओके। नोट्स की कॉस्ट जेब से जाएंगे 500 रुपए। तो नोट्स मतलब जितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया रहेगा उनको ही हम लोग नोट्स देंगे। तो नोट्स का बेटा कोई टेंशन नहीं, ज्यादा स्टूडेंट्स आए क्या कम स्टूडेंट्स आए क्या, हमें क्या प्रिंट आउट निकालने, नीचे जाना है प्रिंट आउट निकाल के लेके आना है, 500 रुपया बच्चे को देना है। तो यहाँ पे मेरा कभी वेरिएशन नहीं होगा। पर अभी हुआ क्या कि मैंने एक्सपेक्ट किया था 30,000 का खर्चा 100 बच्चों में डिवाइड होगा, पर एक्चुअली क्या हुआ, 120 बच्चा आया। कितना बच्चा आया? 120। तो मैं बच्चों को ऐसा नहीं बोलूंगा ए चले अभी बच्चे ज्यादा आ गए तो मैं फीस को कम कर देता हूँ। 300 रुपया हमने चार्ज किया तो हमने बच्चों से कितना रिकवर किया? 36,000। हालांकि मेरा रेंट कितना था? सिर्फ 30,000। ज्यादा बच्चे आए मतलब क्या हुआ? ज्यादा बच्चे आए तो बेटा यहाँ पे मेरा फायदा हुआ, 6,000 रुपया मेरे एक्स्ट्रा मिल गया, जिसको कॉस्टिंग के भाषा में बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्ब मतलब हमने ओवर चार्ज कर दिया। 30,000 रुपया था तो 36,000 आ गया, तो हमने सिर्फ हमने हमारा पैसा अच्छा खासा मिल गया। अभी 90 बच्चे आए तो हम लोग तो लॉस में गए ना भाई। 90 बच्चे आए तो उन्होंने 300 रुपए, वो तो क्या अभी ऐसा नहीं बोलेंगे सर लॉस में, चलो मैं अभी जेब में से पैसा देता हूँ, कौन बोलेगा? हम लोग 300 ही देंगे। ओके, रेंट के टूवर्स तो हम लोग बच्चे से वापस फीस तो नहीं ऐड कर सकते ना, तो वहां पे बच्चा मेरे से 27,000 रुपए ही देखे गया, 90 बच्चे। मेरा तो 3,000 का लॉस हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसको बोलते हैं कॉस्टिंग के भाषा में अंडर एब्सॉर्प्शन। तो कॉस्टिंग जो है ना वो फिक्स ओवरहेड को बजटेड बेसिस पे डिवाइड करता है। बजटेड बेसिस मतलब 300 बच्चे, सॉरी 100 बच्चे। हाँ सर, पूरा ध्यान में आ गया। अभी अकाउंट्स का वैसा नहीं है। अकाउंट्स क्या बोलता है? फिक्स ओवरहेड को बजटेड और एक्चुअल विच एवर इज हाइयर पे डिवाइड करो। हाँ सर, ये अकाउंट्स बोलता है। अभी अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स इज पोस्ट एनालिसिस। कॉस्टिंग डिसाइड करना होता है प्री, पर अकाउंट्स खर्चा होने के बाद। तो दोनों का डिफरेंस समझ लो। कॉस्टिंग इज अ प्री एनालिसिस, हम लोग एडवांस में कॉस्ट निकालेंगे, एंड अकाउंट्स बाद में नेट प्रॉफिट निकालेंगे पूरे खर्चे होने के बाद। तो इधर आपके पास स्कोप है चेंज करने को, बजटेड और एक्चुअल विच एवर इज हाइयर। एंड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग कौन से इस पे लेंगे? तो वेरिएबल ओवरहेड हम लोग एक्चुअल बेसिस पे लेने वाले हैं। वेरिएबल ओवरहेड हम लोग एक्चुअल बेसिस पे लेने वाले। सो अकॉर्डिंग टू मी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके। हाँ, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, पर अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। आया समझ में? यस। थैंक यू। अभी बेटा थोड़ा सा कैसे होता है कि तुम लोग ना थोड़ा दिमाग लगाया करो। प्रॉब्लम इज दैट एवरीवन wants simple shortcuts and it's very difficult. Example 2 and illustration 4 are depending on these illustrations. And what is joint cost? Joint cost are, beta, in joint cost, we divide. Suppose, see, suppose if I'm preparing, manufacturing plastic, then beta, refill बनाया हमने, refill, and then we fill it with red ink and black ink. So this manufacturing of refill before before refilling it, okay, this is a joint cost. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ जॉइंट कॉस्ट। हम लोग इसको बोलने वाले हैं जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट इज नथिंग बट, नाउ हाउ टू डिवाइड इट बिटवीन रेड पेन एंड ब्लैक पेन? सो दिस इज कॉल्ड एज apportionment, apportionment of joint cost, apportionment of joint cost. Remember, so apportionment of joint cost is nothing but it is dividing between red pen and black pen. ओके, सो जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कैसे करना है? रेड पेन में एंड ब्लैक पेन में। नाउ हाउ टू डिवाइड? इन कॉस्टिंग देयर आर 5 मेथड्स। In costing there are 5 methods, but in accounts we have only
वन मेथड। और ये वन मेथड क्या है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अभी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मीन्स व्हाट? हियर आई एम सेलिंग 1 लाख यूनिट्स, ओके, रेड पेन के एट ₹5 per unit, and black pen 80,000 units at ₹6 per unit. So this sales value is a ratio. Suppose if I incurred this refill cost is 10 lakhs. So I will divide it in this ratio. 5 lakhs and 4,80,000 is called as 500 is to 480 ratio, 50 is to 48 ratio. वो ratio में divide करना is called as apportionment of joint cost. So that refill cost me ₹10 lakh and I am selling it in 1 lakh units at ₹5 and 80,000 units at ₹6. So this ratio after multiplication, this is the ratio. 5 lakhs is to 4,80,000 is called as joint cost apportionment. So main product is sales value at split off. Sales value at split off. And byproduct, we record it at net realizable value. I hope you understood it. So cost, very important. Conversion cost we have finished with. Conversion cost we have finished with. So here, joint cost, main product, sales value at split off, and byproduct at net realizable value. Yes, understood? Now last part of the cost, and after that I'm going to give you break. So don't worry, break मिलेगा. इसके बाद other cost. Cost of bringing inventories to present location, that is cost of design. Interest of borrowing if qualifying asset. Now what is qualifying asset? Qualifying asset means which takes time to get ready. For example, wine. So wine you are selling, but wine beta jitni purani, old wine is always better. So it takes more than 1 year, and for that you have taken a loan for manufacturing of wine. So such interest on borrowings is beta added. इसको हम लोग add करते हैं. Amortization of intangible assets related to production. So for example, any patents, copyrights, you are paying for inventory. Next, cost is over. NRV. Now NRV is very simple. It's a realizable value and it is entity specific. It is not market related. Entity to entity NRV is different. Okay. For WIP, realizable value minus FPC minus selling expenses. And for finished goods, okay, for finished goods, it is only realizable value minus selling expenses. Realizable value means amount which you realize after sales. Suppose if WIP is there, WIP, we need further processing cost. Okay, WIP में further processing cost आएगा. We will see it in illustration. So today, just understand the concept. Realizable value minus further processing minus selling expenses, and finished goods में realizable value मतलब मैं market में बेचूंगा ₹100 में, पर I have incurred brokerage देना पड़ेगा 4. So my finished goods value is 96. Take this, बेटा important है. WIP and finished goods. मेरे इसमें ये एनआरवी का चार्ट थोड़ा गलत हुआ है. एनआरवी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए था. WIP एंड फिनिश गुड्स. WIP को लिखना रियलाइजेबल वैल्यू माइनस FPC माइनस सेलिंग एक्सपेंस, एंड फिनिश गुड्स को ओनली रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस. वहां पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं आएगा. 16 नंबर का ये, ठीक है, याद कर लो बेटा. ओके. एक सेकंड ना बेटा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं.
beta, for this I have prepared these notes for only your understanding. See how beautifully I have covered all these points. Okay. Exclusion. Exclusion. You should not consider in the inventory valuation. Number one, abnormal production cost. Today I'm not going to explain it. Okay. You will solve illustration, you will understand it. Storage cost, unless production requires, that is raw material and WIP. Okay, unless means इनको consider करेंगे. Storage cost of finished goods we never consider. So finished goods को नहीं consider करेंगे. Storage warehouses where you kept your finished goods we won't consider. Raw material or WIP का consider. Administration overhead we won't consider. Selling and distribution overhead we won't consider. And remember, exchange differences also we won't consider, and we are going to solve illustration based on this exclusion. So let's understand, let's by heart abnormal, storage, administration, selling and distribution, and exchange difference. Okay beta, cost formulae we will see it in the next session. अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है S2 के लिए, and we are going to solve S25 questions. Okay, but before that please take screenshots. अभी it's a time for taking all screenshots. S2 का एक कीजिए, आप जाइए. हाँ जी, मैं भी जाता हूँ. Please, please, please make sure you will write all these in up to tomorrow's session. मंडे को सेशन है हमारा. चलो, very important standard. Okay, scope, you have to write it in 100 pages book. Replacement cost is very important one. Cost of purchase. एक सेकंड, हाँ, एक ही मिनट. ओके, कॉस्ट ऑफ परचेस, हाँ जी बेटा, screenshots are very very important. If you don't get any concept, yes, you can ask me. Further processing cost, beta, after solving example you will understand it. आज ये सब लिखो तो लिखते टाइम बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. See, in NRV you can write it in WIP, and for finished goods it is realizable value minus selling expense. Here also in notes, and FPC is further processing cost. Okay, same thing. Okay, cost formula beta I will explain you day after tomorrow. And this is the last part.
Yes, and in after break, beta, we are going to solve S25K questions with presentation, and I will give you notes for S25 also, screenshots for S25. So S25 is very important illustration wise. Okay, it's very simple. We are going to solve it after break. Chalo, break le लीजिए मनीष जी.
चलो लेट्स कम टू S25. All illustrations and answers. Illustration number 1. Illustration number 1 बेटा. Welcome back once again. चलिए आ जाइए बेटा फटाफट. I hope you have taken your dinner. Okay. Sir, what will say the company which is subsidiary of fellow sub company? It's also related beta. Anmol. चलिए. Since Sincere Corporation is dealing in a seasonal product, sales pattern of the product, quarter wise given, first quarter 10%. Okay. Information related to first quarter. Sales 80 crores. Salary 60 crores. Advertisement expense 4 crores. Advertisement and selling expense 8 crores. While preparing interim financial report, they want to defer 10 crore expenditure to the third quarter. So deferred means they have to transfer, divide. Defer means divide to third quarter as more sales in third quarter. And third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonable nature of business and expenditure are uniform, calculate the result of first quarter, whether it is allowed, not at all. देखो बेटा वो क्या बोल रहे हैं अभी एक बार हिंदी में समझ लो. इनका बोलना ये है कि फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स देखो आपका 10% है, मतलब 100% में से यू आर सेलिंग ओनली 10% इन द फर्स्ट क्वार्टर. तो थर्ड क्वार्टर में सेल्स कितना है 60%, मतलब थर्ड क्वार्टर का सेल्स ज्यादा है. अभी थर्ड क्वार्टर का सेल्स ज्यादा है तो इनका बोलना क्या है कि थर्ड क्वार्टर में आप लोग सेल्स को ज्यादा बता रहे हो तो खर्चा भी उसमें ज्यादा बताओ. सो बेटा राइट डाउन आंसर ऑन रफ पेजेस. चलो आंसर को रफ पेजेस में लिख लो जल्दी से. जल्दी से आंसर को लिखो. लिखिए. अकॉर्डिंग टू लिखिए. इलू 1 नॉर्मल पेन से लिखिए. अकॉर्डिंग टू S25, नाम भी एग्जाम में पूरा लिखना है. इनकम 400 पेजेस के बुक में डायरेक्ट लिखो. फर्स्ट इंडेक्स प्रिपेयर करो. प्रिपेयर योर इंडेक्स. शुड बी रिकॉग्नाइज्ड when they earned or incurred respectively. Okay. Hence, company view of deferment
is not correct. Profit calculation, serial number, particulars, rupees, and in crores. Rupees in crores. इधर लिखो फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट कैलकुलेशन. फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट कैलकुलेशन. रोमन 1 टर्नओवर 80. 80 है ना टर्नओवर. यस. व्हाट इज पी एंड एल प्रो फॉर्मा? अदर इनकम 0, टोटल इनकम 1 plus 2, 80. Roman 4 less changes in inventory, 0. B salaries and other cost 60. C administrative and selling expense 12. 72. D तो ठीक है. And profit Roman 3 8. Okay, check the answer whether it's 8. Yes. This is how you have to present the answer. Over, write down. इलू 2. चलो 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 लिखो. Yes, any doubt? Any doubt in इलू 1? So ऐसा deferment allowed नहीं है. It's mandatory. You will record it when the expenditure is incurred. So in your 400 pages book, write down फटाफट. But the changes in inventory is the difference between opening stock and closing stock. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को बोलते हैं चेंजेस इन इन्वेंटरी. सो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर बेटा आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस. कौन से चैप्टर में? फाइनेंशियल, यस, स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में राइट डाउन इंडेक्स. पेज नंबर, रिमार्क्स, रिमार्क्स एंड कैटेगरी. बेटा लाइट गई है. ओके, रिमार्क्स एंड कैटेगरी.
थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा। सैटरडे ओके, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा बेटा। नंबर 1, यस, इंडेक्स में लिखो बेटा। S25। Deferment of expenditure is not allowed. It is category A. Category A. Second question, calculation of correct income. Calculation of correct income. Second question, sorry, tax rate का है। चलो, tax rate का question है। Let's understand and copy the answer. The accounting year ends on 30th September 2001 and it makes reports quarterly. However, the purpose of tax year ends on 31st March every year. For the accounting year 1st October to 30th September, the quarterly income is below. Average rate up to 31st March 2001, 20%. But it's very simple. So here I will multiply by actual income tax rate 31st March 2001 and 31st March 2002, it is 30%. And just write the answer. 200 into 20%, 40, 40, 60, 60. Yes, chalo. Write down the answer. चलो कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो फटाफट। Illustration 2 कॉपी करो। It's very simple, C category question. Okay, write down fast.
ये S25 है, कौन बच्चा पूछ रहा है ये कौन से प्रॉब्लम है? चलो, ओवर, टेल मी ओवर, ओवर बोल दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। टेल मी ओवर बेटा, फटाफट। ओके। हाँ बेटा शुभम। एक ही मिनट, हाँ बेटा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वन, उसको भी लिख लो जरा, आज स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा लिख लो, बिकॉज इंडेक्स भी दे रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इनकम, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इनकम। स्पेलिंग गलत हो गया है। यस, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इनकम, इलू 3। एक बढ़िया सम है टीवाई के वाला इनका। Accountants of Purnima Limited showed a net profit 7,20,000 for the third quarter of 2001, incorporating the following. Bad debts 40,000 incurred during the year. 50% of bad debts deferred, not allowed. Not allowed. Not allowed. ध्यान में रखिए, not allowed. So 20,000 you will deduct next quarter का अब बीच. Okay, so 20,000 deduct now. Extraordinary loss 35,000 incurred has been fully recognized in this quarter. Correct है? Correct. Additional depreciation 45,000 results in the method of charge of depreciation, assuming 45,000 is charged for the third quarter only. Correct है? Ascertain the quarterly income. So your answer will be 7,20,000 minus 20,000, but you have to give all these answers. Okay. See, bad debts will be deducted from the current quarter, extraordinary loss and additional depreciation. Hence no adjustment required. So correct income is 7 lakhs. Copy करो चलो. Third answer. So no need to do this at home. आज फटाफट कॉपी कर लो. 1, 2, 3. Write in your 400 pages book. कॉपी करने के बाद ओवर लिखो बेटा. हाँ बेटा, चलो जल्दी लिखो. तीनों आंसर. So bad debts you have to deduct in the current quarter, extraordinary loss also, and additional depreciation. Yes, no need to write it again. चलो जल्दी जल्दी लिखो. Already you have a lot of homework. S2 पूरा पढ़ना है.
इट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का आनंद जी हो चुका है, ऑलरेडी ओवर. ओवर बेटा. यस. अरे बेटा ओवर क्या. यस चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट भी आ चुकी है. यस. Illustration number 4 is similar to illustration number 1. Okay? No. No, it's similar to illustration 1. So, ILU 4, इंडेक्स में आ जाओ. इंडेक्स में लिखो similar to 1. So, Z category. So, 4 illustrations are over. TYK में आ जाओ बेटा. TYK.
In view of the provisions of Accounting Standard 25 on interim financial reporting, on the basis you will calculate for an interim report period the provisions in respect of defined benefit scheme like pension gratuity. So provision करोगे या नहीं करोगे? So how to write the answer? See the answer. Accounting Standard 25 suggests the provision in respect of defined benefit scheme. So provision means P&L, like pension and gratuity for an interim period should be calculated based on year to date. P&L matlab year to date. Basis by using actuarial determined rates. Actually matlab person appointed by insurance company. Okay, sorry, actually मतलब वो एग्जाम पास होनी पड़ती है. You have to pass this exam. It's very difficult one, and they calculate the provisions. Okay, and company appoints them for calculation of this provision, and we have to adjust it in the market fluctuation at that time, and significant curtailments, settlements, or other significant in S15. We will see this. चलो लिख लीजिए बेटा जल्दी से. TYK 8, we have to make a provision. We have to make a provision. नहीं तो ठीक है. TYK 8 is not illustration actually. तो रहने दीजिए. Illustration नहीं है. Yes. So TYK 8 is a theory question. Yes, theory question है. आ जाइए. On 30th June 2001, Asmita Limited 2 lakhs. Net loss of disposal of business segment. Also on 31st July, company paid 60,000 for property taxes. How about transaction should be included in the net income for 6 months interim report? For 6 months interim report. Okay. As per S25. So facts of the case. On 30th June 2001, Asmita Limited incurred 2 lakhs net loss of the disposal of business segment. And on 31st July, the company paid 60,000. किसके लिए दिया बेटा? 60,000 for property taxes. What is the provision? Provision is as per S25. If an enterprise prepares and presents a complete set of financial statement in the interim financial report, and content of those statements should conform to the requirement as applicable to annual complete set. In case 30th September, Asmita would report the entire 2 lakhs. Report entire 2 lakhs of loss on disposal of business segment, and a cost charge to expenses in annual period should be allocated to interim period on accrual basis. Since 60,000 property tax is charged to entire calendar year, 30,000 is for 6 months, while remaining 30,000, 15,000 for January to March, remember, shown as the outstanding amount of the previous year, and another 15,000 related to quarter 2001 to December 1 reported as prepaid expenses. See, remember this 60,000 is from January 2001 to December 2001. Your period starts from April to September. So this is outstanding of last year. 6 months
expenses, and this October to this 3 months is prepaid. So 3 months outstanding of last year, 6 months is expenses, and 3 months is prepaid. You can draw this diagram. So January to April is last year. April to September current year. And December is prepaid. Draw this diagram. So net disposal, you will record it in the current year. But 60,000 you will divide it in 3 parts. Last year now paid, 6 months expenditure, and 3 months we will record as prepaid. IMP question. Okay, easy tha? Yes, draw this diagram and take a screenshot of this question, beta. You can write it afterwards. TYK9. It's like theory question only. Acha, TYK 8. Provision for retirement benefits. Provision for retirement benefits. You can write like this. TYK9. Treatment. Loss on sale of segment. 2. Loss on sale of segment के बाद 2 is प्रॉपर्टी टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स ही था ना, क्या था वो, प्रॉपर्टी टैक्स फॉर कैलेंडर ईयर, टैक्स फॉर कैलेंडर ईयर. And draw the diagram. 1 January to 31st December, 1 April to 30 June, prepaid, expense, outstanding, paid. A category. Yes, TYK 8 and TYK 9. TYK 8 and TYK 9. Easy बेटा. हो गया बेटा, खत्म हो गया स्टैंडर्ड. Almost we are at the end. Only 2-3 questions are remaining. One question is very important. 11 number. TYK 10. अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट्स बाद में देता हूं. ओके, TYK 10. Enterprise reports quarterly estimates of annual income 10 lakhs. Assume tax rate 5 lakhs at 30% and balance at 40%. Estimated quarterly income 75,000, 2,50,000, 375 and 3 lakhs. How to present the answer? See the answer presentation. See, estimated annual income is 10 lakhs. Okay. We use weighted average annual income tax rate. Now, this is a new concept. See beta, this is a new concept. ध्यान दीजिए, IMP question है. Weighted average red pen annual tax rate. While copying it, red pen use करना. Estimated annual income. What is the estimated annual income? 10 lakhs. How much is the tax? 30% on 5 lakhs, 1,50,000, and 40% on the balance. Okay, so balance is 5 lakhs. So 5 lakhs पे 30%, 1,50,000, 2 lakhs rupees on next 40%. So 3,50,000 divided by 10 lakhs. What is the tax rate? 35%. And every quarter, you will multiply by 35%. Every quarter, recognize in every quarter. This is the quarter-wise kharcha.
यस स्क्रीनशॉट लोगे या यू वांट टू राइट इट? स्क्रीनशॉट लोगे? इलस्ट्रेशन 10 आई विल लीव यू अर्ली, एक क्वेश्चन होने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? व्हाट यू वांट, स्क्रीनशॉट और फाइनल आंसर? ओके, वेरी इजी। यस, एंड लास्ट इलस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमपी क्वेश्चन। अच्छा, इंडेक्स बाद में लिख के देता हूं। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4 lakhs of third quarter. So you can see here profit before tax reported given as reported. इधर लिखना था। अरे केम रे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज रिपोर्टेड इन और गिवन लिखने का। गिवन 4 lakhs, डिविडेंड इनकम 4 minus 1। हाँ, डिविडेंड इनकम 4 lakhs received, but quarter में only 1 lakh, not allowed. Full 3 lakhs you have to consider. So 3 lakhs we will add. 3 lakhs add. So we consider only one. So add 3 lakhs because what is received, we will consider that. Okay. So add 3 lakhs. 80% of sales promotion expense. 15 lakhs incurred in the third quarter has been deferred to fourth quarter as sales in the last quarter is high, not allowed. So 80% of 15 lakhs, 12 lakhs इधर ही माइनस करो। 80% into 15 लेस 12 lakhs लेस। नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं, करंट क्वार्टर में ओनली यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, सो इट्स नॉट करेक्ट। सो -12 in third quarter the company changed the method of depreciation from WDV to SLM. Okay, excess depreciation 12 lakhs, the entire amount has been debited in third quarter, though share of third quarter is only 3 lakhs. Correct है, correct है, so no need of rectification. Correct, so no rectification. 2 lakhs extraordinary gain received was allocated equally to third and fourth year. No, so 1 lakh add करेंगे, 1 lakh add, 2 minus 1 add. Cumulative loss, so बेटा पूरा का पूरा थर्ड क्वार्टर में बताना है. You have to show fully in third quarter, full amount. So 1 is not allowed, not allowed. 20 is allowed. Okay, this is correct. 20 is correct. So 1 add कर देंगे थर्ड क्वार्टर में, Q3 Q4. Okay, so this is allowed, तो एक ऐड करो. Cumulative loss change in the method of inventory valuation was recognized in third quarter 3 lakhs. Out of this 1 lakh relate to the previous quarter. So quarter 2, quarter 3, loss you recorded 3, not allowed. It's correct. -1, -2, correct. So add आपको और add करना पड़ेगा. So you deducted -1. So now add 1 is a correct. So this is correct presentation. So -1 add करना है. Yes, add. And sale of investment in the first quarter is 20 lakhs. The company has apportioned Q2, Q3, Q4. 5, 5, 5, 5 is wrong. What is correct? 20. तो थर्ड क्वार्टर में से 5 माइनस करेंगे, Q3 में से 5 माइनस करेंगे. यस, सो Q3 में से -5 and this is the profit before tax. So this is the correct answer. Yes. Easy. Yes, easy है, easy है, easy है, easy है. So write down in index. इंडेक्स में लिखो TY के 10, TY के 10. क्या करोगे बेटा TY के 10 में? वेटेड एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वेटेड एवरेज रेट ऑफ टैक्स.
A and A plus plus TYK 11 adjusted profit. चलो TYK 10 and 11 बेटा IMP है, so write down TYK 10 and 11. चलो अभी स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट. ये 400 पेजेस के बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं. आई एम गिविंग यू टाइम. कंक्लूजन. 2, 3, 4, 5 TYK. Next TYK 6 and 5 का पार्ट. 7, 8, 9, 9 part 2, 10, 11, part, and adjusted profit before tax is the final answer. So beta here we have finished with, एक second screenshot ले लो. Here we have finished with S25, all answers of 400 pages book. बहुत सारा लिखना है. 7.11 पैराग्राफ किसी को तो समझ में नहीं आया. 7.11 पैराग्राफ. Cost incurred unevenly during the financial year. But you cannot defer it. Today only we understood it. So this given in the, we cannot defer it. Incurred unevenly during the financial year should be anticipated or deferred for interim purpose if and only if it is appropriate to anticipate or defer. Otherwise, a cost does not meet the definition of asset and is not deferred in the interim report. So remember, इतना ही याद रखो कि deferred cost is not allowed, is prohibited. Deferred cost is not allowed. We record in the year in which, in the quarter in which it is incurred. जो अब भी हमने पूरा complete किया. Any other difficulty? Okay. चलो. And
S25 की थ्योरी, यस S25 की थ्योरी लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। यस, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड। Write down this selected explanatory notes. Today in 100 pages book, you have to write this. Materiality cost. Bus. So here we have finished with the standard. I hope you understood it. So tomorrow, day after tomorrow, beta, we are going to solve S2K illustrations, and your homework is read theory and illustration 2 homework. We are going to solve it the one last hour, and S10, we are going to start with new accounting standard. Don't give up accounting standards. Though you are feeling boring, but beta, I will make it very interesting. तो अभी मिलेंगे मंडे को। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।